Okay, so today's class we will discuss the uh, software testing. Software testing. So first, what do you mean by testing? Testing is the process to identify all the defects existing in a software product. It provides a practical way of reducing defects in a system and increasing user confidence in a developed system. Okay, so different type of testing means error. The error टेस्टिंग क्यों यूज होता है कि जैसे एरर हो, बग्स हो, फॉल्ट हो एंड फेलियर हो, उसको हम इम्प्लीमेंट करना है और उसको मॉडिफाई करना है यूजिंग टेस्टिंग. ओके, सो एरर मीन्स द error means mistake. Okay, it may be a syntax error for understanding or specification or logical errors. Okay, so error means mistakes. मतलब logically अगर कोई भी implementation करने के लिए error आ जाए तो उसको हम calculate कर सकते हैं. ठीक है, जैसे fault is the representation of an error. Okay, where representation is the mode of expression such as data flow diagram, ER diagram, then source code. Okay, and failure is said to be the inability of the system to perform the desired task. Failure occurs when a fault exists in a system. तो failure and fault एक के ऊपर डिपेंडेंट है. तो failure occurs when fault executes. Okay, or a particular fault may cause different failure depending on how it has been exercised. The failure may be executed. Okay, acha, so first of all we will see here some methodology of testing, that is functional testing. So functional testing, functional testing and implementation testing. Testing approaches. Functional testing allow to test the functionality of a program. Okay, it only includes the observation of the output for certain input value. फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स फंक्शनैलिटी जो है वो पता नहीं होता है. मतलब आप बोल सकते हो कि इंटरनल कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी एग्जीक्यूशन, इंटरनल एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर कोड या फिर इंटरनल कोड को एनालाइज नहीं कर सकते. ठीक है ना. तो फंक्शनल टेस्टिंग includes only the observation of the output for certain type of input. Okay, so input के हिसाब से हम output को ही generate कर सकते हैं. functional testing में कोई भी internal code analyze या फिर internal structure examine नहीं कर सकते. ठीक है, तो this is one type of, you can say, this is one type of black box testing. Okay, so functional testing is a black box testing. Means content of the box are hidden from user or tester side. Okay, means आप ये कह सकते हो कि इनपुट जो भी गिवन है उस हिसाब से आउटपुट जनरेट हो रहा है. तो इंटरनल इंफॉर्मेशन हिडन है. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर को या फिर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर यूजर या फिर टेस्टर साइड से उसको वो पता नहीं है. ठीक है, सो फंक्शनैलिटी इज अंडरस्टूड completely in terms of input and output. So this is the case of functional testing, means black box testing. Okay, so black box testing methodology
Okay, black box testing methodology looks at what are the available inputs for an application and what are the expected output are the are that should result for each input. Okay, so that will tell by the black box testing. So advantage is what? Okay, black box testing is easy to use and yeah, quicker test case development and simplicity is there. So it is verified that the system meets its functional specification और requirement. लेकिन disadvantage या फिर drawbacks क्या हो सकता है कि मेंटेनेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इट्स डज नॉट इंक्लूड the test cases for maintenance and robustness and other non-functional requirements. Okay, so internal logic remains unknown. So this is the drawback for black box testing. Okay, this is the drawback for black box testing. Acha. So next come white box testing. White box testing shows the अच्छा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देखो यहाँ पे फंक्शनल टेस्टिंग डिफरेंट टाइप हो सकता है कि इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ठीक है कॉज इफेक्ट ग्राफिंग स्टेट बेस्ड टेस्टिंग और भी जैसे होता है ओस्ट केस टेस्टिंग robustness testing decision table based testing cause effect graphing technique. Okay, so these are the different type of functional testing and white box testing क्या बोलता है? White box testing is called a structural testing. Okay, it is conducted to test program and its implementation uh, in order to improve code efficiency of structure. It is also known as structural testing. Okay. So structural testing means testing enables the user to see what is happening inside the application. मतलब इंटरनल जो भी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग हो रहा है या फिर डेटा फ्लो टेस्टिंग हो रहा है वो हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक सो टेस्टिंग मेथडोलॉजी लुक्स अंडर द cover and into the subsystem of the application. Okay. So here some white box testing technologies are control flow testing and data flow testing. Control flow testing is the purpose of the control flow testing to set up test cases which covers all statements and branch conditions. The branch conditions are tested for both being true and false so that all statements can be covered. Okay. Data flow testing, the testing technique emphasizes to cover all the data variables included in the program. It tests where the variables were declared and defined and where they were used to change. Okay. So these are the white box and black box testing. And next is testing levels. So testing levels यहाँ पे level of testing are unit testing, integration testing, and system testing. Okay, so these are the main three levels of testing. Unit testing is undertaken when a module has been coded and successfully received. ओके एक ही मॉड्यूल को अगर टेस्ट करना चाहे यूनिट का मतलब ही ये है कि the programmer performs some test case on that unit of program to know if it is error free or not. Okay. So testing is performed under white box testing approach. Means this is depending on structural testing.
Okay, so unit testing is undertaken when a module has been coded and successfully received. Okay, uh, here the size of the module is small, and we can locate the error easily and fairly. We can say that. Okay, and unit testing. यहाँ पे दो अलग मॉड्यूल होता है, एक होता है ड्राइवर मॉड्यूल एंड अनदर इज स्टब मॉड्यूल. Okay, so driver module contains a non-local data structure accessed by a module under test, and all the different function of the module with appropriate parameter list. Okay, and stub module, it may consist of several stub procedures. Each stub procedure is represented as dummy procedure, and that has the same parameter list which has given procedure but has a highly specified behavior. Okay, so these are the two modules for unit testing. Okay. ठीक है. अच्छा, next integration testing. Integration testing is what it determines the interface between the modules with some parameter match or both side as two types. Okay. So one is top-down integration and another is bottom-up integration. Okay, so integration testing, even if the units of the software are working fine individually, there is a need to find out if the unit of integrated together would also work without errors. Examples, they say argument passing and data updation, etc. Okay, so top-down integration and bottom-up integration. Top-down means it starts with main routine and one or two subroutine in the system is tested. Okay, so then the immediate subroutine for the skeleton is combined with it and tested. So drawback of top-down integration testing is that we can say that there is an absence of lower level routine and it may cause difficult to exercise. Okay, and on the top level routine in the desired manner. But bottom-up integration, where each subsystem is tested first, then the full system is tested. Okay. So subsystem may consist several modules, and you can say that which communicate each other through a well-defined interfaces. Okay, so so subsystem may be tested means both the data and the control in interfaces are tested in a integration. Okay, so this is the bottom-up integration testing, and drawbacks is that the complexity occurs when the test case is performed for the large number of subsystems. Okay, so this is the concept of integration testing. Next, next first we will discuss the acceptance testing. So acceptance testing, uh, here you can see that what the definition is that when the software is ready to hand over to the customer, it has to go through last phase of testing where it is tested for user interaction and response. This is important because even if the software matches
all user requirements, and if user does not like the way it appears or works, it may be rejected. It means acceptance testing conducted when the software is developed for a specific customer and not for a large public or audience. Okay, so purpose of acceptance testing is it allows customer to validate all the requirements or check validate means we have to check the requirement which is respect to the SRS, means software requirement specification. Okay, so acceptance testing may conduct when the specific customers are present and that will not further large public or audience. Okay, so purpose तो पता चल गया कि वैलिडेट है या नहीं वो चेक करना है, ठीक है। लेकिन कैसे चेक करना है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि कस्टमर टेस्ट करेगा सॉफ्टवेयर को और फीडबैक जनरेट करेगा। अगर फीडबैक नेगेटिव फीडबैक आता है तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और उस हिसाब से फाइनल सॉफ्टवेयर डिलीवर किया जाए, ठीक है। सो अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग आर द टू एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या फिर आप बोल सकते हो उसको सिस्टम टेस्टिंग। तो अल्फा बीटा टेस्टिंग कंडक्ट when the product is developed for anonymous customer, means acceptance testing is not possible, anonymous customer वहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं पॉसिबल होता है, तो उस केस में अल्फा बीटा टेस्टिंग कैरिड आउट होता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग? Alpha testing done by the customer at developer side, okay, and beta testing is done by the customer by the users or customer side. Okay, so here's the definition told that alpha testing, the term of developer themselves performs alpha testing by using the system as if it is being used in work environment. They try to find out how user would react to some action in software and how the system should respond to input. Okay, and beta testing, after the software is tested internally, it is handed over to the user to use it under their production environment only for testing purpose. This is not as yet the delivered product. Developers expect that users at this stage will bring minute problems which were skipped to attend. Okay, so alpha testing done by what done by the customer at the developer side, and beta testing is done by the customer at the users or customer side. Okay, so alpha testing is conducted in a controlled environment, but beta testing conducted in real-time environment, not under the developer's control. Okay, and alpha testing here developer side present means developer is also present, but in beta testing developer is not present. Okay, and error or failures are recorded in alpha testing, but failures are reported in beta testing. So alpha testing is one type of व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मीन्स यहाँ पे स्ट्रक्चरल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पे डेवलपर है जो कि एरर्स को इम्प्लीमेंट करने में मदद करेगा, और बीटा टेस्टिंग एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है
Okay, only it includes the observation of the output for certain input value. Okay, no code analysis, no examination of internal structure of code is there. So this is the this methodology. In that case, the internal implementation या फिर content of the software is hidden from the user or tester. Okay, so beta testing is one of the black box testing. ठीक है? अच्छा. Next is system testing, and another testing is there, system testing, and system testing mainly shows the functional testing, performance testing, and security and probability. Okay. Okay, so functional testing is what? Functional testing test all the functionalities of the software against all the functionalities of the software against the requirement. Performance testing, the test proves how efficient is the efficient the software is. It takes the effectiveness and average time taken by the software to do the desired task. Okay, so system testing, here the subsystem are integrated to make up the entire system. Okay, and it concerned with the finding error that result between result gives interaction between the subsystem and system component. So system testing one uses one or more following test cases. These are the functional testing, performance testing, security, and probability. So functional testing test all the functionalities of the software against the requirement. Okay, and against the requirement, and performance testing, the test proves how efficient the software is. It tests the effectiveness and average time taken by the software to do desired tasks. And performance testing is done by means of load testing and stress testing, while the software is put under high user and data load under various environment conditions. Okay, so security and probability, these tests are done when the software is meant to work on various platforms and accessed by number of persons. Okay. तो ये हो गया सिस्टम टेस्टिंग. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस टेस्टिंग, stress testing, volume testing. So different type of testing are present there. Performance testing means it is applied to check whether the system meets all non-functional requirements identified in the SRS document or not. Okay. SRS document means functional requirement document. Okay, so next, stress testing. Stress testing means stress testing is also one type of black box testing, which design to identify the abnormal or illegal condition. It may be input data or processing
time or data volume, utilization of memory. Okay, so these are the methodologies for stress testing. Volume testing means मतलब डेटा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के केस में, ठीक है, सक्सेसफुली वो डिजाइन हो रहा है या नहीं, वॉल्यूम टेस्टिंग वो चेक करता है, ठीक है। तो वॉल्यूम टेस्टिंग में भी may check or apply whether the software, whether the data structure means array, stack, queue have been designed successfully for extraordinary situation or not. Okay, and next configuration testing, compatibility testing, recovery testing, maintenance testing. So different type of testing methodology present there. Okay, so I think यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। और जैसे हमने आज पढ़ा कि फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आपका एक है डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, वो उसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आता है, तो वो भी हम लोग करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, सिर्फ टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का कुछ चीज़ें बाकी है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस ये भी बाकी है, और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हमने करवाया है वो भी बहुत मतलब इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, और वो एग्जाम में भी आता है, तो आप लोग वो भी चेक करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आया है। फर्स्ट क्लास है टेस्टिंग का आज, और भी बाकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? ओके, तो अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत इसके रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो मैंने अभी बताया कि अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, उसके जो डिफरेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग के केस रिलेटेड कुछ मतलब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जैसे एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन, टेस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंटेशन, मैट्रिक्स डॉक्यूमेंटेशन, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग, लेवल ऑफ टेस्टिंग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। और जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जैसे हमने देखा था कि टॉप डाउन इंटीग्रेशन एंड बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो इसके जैसे शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना हो। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल और टेस्टिंग। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, अच्छा।
थोड़ा बहुत बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस के बारे में बोल सकते हैं. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द fact that input values near the boundary have higher chance to error. ठीक है, बाउंड्री के पास जितने भी इनपुट वैल्यूज है उसमें एरर आने का ज्यादा चांसेस रहता है. ठीक है, तो बाउंड्री मीन्स बाउंड्री वैल्यू मीन्स वैल्यू इधर बाउंड्री के ऊपर रहेगा और जस्ट अबव द बाउंड्री और जस्ट बिलो द बाउंड्री. तो मीन्स जैसे आपको चेक करना है कि यहाँ पे कि वैल्यूज कैसे लाई कर रहा है. बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में जैसे 1 to 100. ठीक है, तो 1 to 100 1 जो है क्या वो क्या होता है उस केस में लोअर बाउंड्री, 100 उस केस में अपर बाउंड्री है ना. तो बाउंड्री के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज है उसको हमें एनालाइज करना है डिपेंडिंग ऑन फंक्शनल टेस्टिंग. ठीक है, ओके. ठीक है, तो आई थिंक आज के इतना ही. नेक्स्ट क्लास में बाकी के चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. ओके. अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो यहाँ पे. कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आज के लिए इतना ही. क्लास हम एंड कर. ठीक. ठीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. ठीक, थैंक यू.